Dear students, this is Professor Kavita Kamerikar from Sagar Institute of Science and Technology, Bhopal. In this lecture, we will discuss the next topic of unit number 2, that is the sampling oscilloscope and storage oscilloscope. This is a lecture plan 16 of the subject EMI. So start with the sampling oscilloscope. The sampling oscilloscope works on the principle of sampling. What is sampling? For the high frequency signals, the electron beam is required to accelerate more. Such increase in the velocity is possible by increasing the voltage of accelerating anodes, but it requires higher deflection potential and it also puts higher demands on the vertical amplifier. So, the solution to such problem is the sampling technique. Using this technique, higher frequency signal is converted to low frequency signal. In this technique, instead of monitoring the input signal continuously, it is sampled at the regular intervals. These samples are presented on the screen in the form of dots. Many thousands of dots may be displayed on the screen. Such samples are merged to reconstruct the input signal. Due to merging of samples, observer receives a continuous signal on the screen. Thus, a very high frequency, more than 300 MHz performance can be achieved using this technique. So, the sampling oscilloscope is a special type of oscilloscope that works on the concept of sampling. It is used to examine a very fast signal. It is an instrument which receives one or more electrical signals and then produces the waveform on the screen simultaneously. It collects samples from several successive waveforms and constructs a complete picture of the waveform from the assembled data. Next is the block diagram of sampling oscilloscope. As we can see from the figure, that the input waveform is applied to the sampling gate of the sampling oscilloscope. The input waveform is sampled whenever a sampling pulse opens the sampling gate, and the sampling must be synchronized with the input signal frequency. The signal is delayed in the vertical amplifier, allowing the horizontal sweep to be initiated by the input signal. So it is the basic of block diagram of sampling oscilloscope. As we can see from the figure, the input signal is applied to the as we can see from the figure that the input signal is applied to the sampling gate. At the start of each sampling cycle, a trigger pulse is generated which is used to activate the oscillator. जब भी यहाँ पर हमें सैम्पलिंग स्टार्ट करनी होगी, उसके पहले यहाँ पर ट्रिगर इनपुट जनरेट होगा जो कि ऑसिलेटर से कनेक्टेड है. ऑसिलेटर में इसका आउटपुट जाएगा एंड इट विल स्टार्ट द सैम्पलिंग. The oscillator output is given to the ramp generator which generate the linear ramp signal. Oscillator का output कहाँ जा रहा है? Ramp generator में. The ramp generator will generate linear ramp signal. Since the sampling must be synchronized with the input signal frequency, the signal is delayed in the vertical amplifier. Delay करने के लिए हम क्या use करेंगे? Delay line. Okay. The staircase generator is here. It is used to produce a staircase waveform. A staircase waveform is like this. This is a staircase waveform which is applied to an attenuator. ये कहाँ अप्लाई होगी? Attenuator में. जो भी यहाँ पे staircase waveform जनरेट होगा, यहाँ से staircase waveform जनरेट हो रहा है and it is applied to the attenuator. The attenuator controls the magnitude of the staircase signal and then it is applied to a voltage comparator. ये कहाँ अप्लाई हो रहा है? Voltage comparator में. Another input to the voltage comparator is the output of ramp generator. Now, the voltage comparator will compare both the signals and produces the
आउटपुट पल्स व्हेन द टू वोल्टेजेस आर इक्वल। इन दोनों को कंपेयर करेगा कंपेरेटर और यहाँ से सैम्पलिंग पल्स जनरेट करेगा व्हेन द टू वोल्टेजेस आर इक्वल। दिस इज अ सैम्पलिंग पल्स विच इज अप्लाइड to the sampling gate through the gate control circuitry. Now this pulse open the diode gate and the samples is taken in. जैसे ही यहाँ पे पल्स आएगी वैसे ही गेट ओपन हो जाएगा और यहाँ से इनपुट सिग्नल यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे, सैम्पलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी सैम्पल्स विल बी स्टार्ट। This sample signal is then applied to the vertical amplifier and then to the vertical डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जो भी सैम्पल सिग्नल यहाँ से जाएगा वो कहाँ जाएगा, वर्टिकल एम्पलीफायर से होते हुए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स में जाएगा। द आउटपुट ऑफ द स्टेयरकेस जनरेटर इज ऑल्सो अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ स्टेयरकेस द स्पॉट मूव्स ऑन द स्क्रीन। द कंपैरेटर आउटपुट एडवांसेस द स्टेयरकेस आउटपुट थ्रू वन स्टेप। हर स्टेप में यहाँ पे कंपैरिजन होगा। स्टेयरकेस आउटपुट क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आउटपुट। तो हर स्टेप पे इसमें कंपैरिजन होगा, हर स्टेप पे सैम्पलिंग होगी और हर स्टेप में वहाँ पर हमें एक स्पॉट मिलेगा। और आफ्टर दैट द स्क्रीन, जो हमें फाइनली स्क्रीन मिलेगी, दैट इज़ अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म। आफ्टर द सर्टेन नंबर ऑफ पल्सेस द स्टेयरकेस जनरेटर रीसेट्स। The smaller the size of the steps of the staircase generator, larger is the number of sample and higher is the resolution of the image. जितना ज़्यादा हम स्टेप साइज लेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर जितना ज़्यादा हमने स्टेप साइज लिया है, यानी कि स्मॉलर द साइज ऑफ द स्टेप्स, साइज कम लेने से क्या होगा, लार्जर द नंबर ऑफ सैम्पल्स हो जाएंगे एंड रेजोल्यूशन विल बी हायर। सो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप। यहाँ पे हम पूरे सिग्नल को एक साथ ना देके उसके हम सैम्पल्स लेंगे और हर सैम्पल्स के लिए हम उसको एम्पलीफाई करके आउटपुट में लेंगे, बट द फाइनल आउटपुट विल बी ए कंटिन्यूअस वेव फॉर्म ऑफ द असेंबल्ड सैम्पल्स। नाउ नेक्स्ट इज द वेव फॉर्म। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है उसी को हम यहाँ वेव फॉर्म से समझ सकते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ ईच सैम्पलिंग साइकिल द ट्रिगर पल्स एक्टिवेट्स एन ऑसिलेटर। जैसा कि आपने देखा था ट्रिगर पल्स कहाँ जा रही है, ऑसिलेटर में जा रही है। एंड अ लीनियर रैम्प वोल्टेज इज जनरेटेड। नाउ दिस वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ वोल्टेज कंपैरेटर विच कंपेयर्स द रैम्प वोल्टेज टू अ स्टेयरकेस जनरेटर। व्हेन द टू वोल्टेजेस आर इक्वल द स्टेयरकेस एडवांसेस वन स्टेप। तो यहाँ पे हम डायग्राम से देख सकते हैं, दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म, दिस इज़ द ट्रिगर पल्स, दिस इज़ द स्वीप रैम्प वोल्टेज। जब यहाँ पर दोनों वोल्टेज सेम हो रहे हैं, यानी कि ये और ये, यहाँ पर जब दोनों एक साथ, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेम हो रहे हैं, एट दिस टाइम द सैम्पलिंग पल्स विल बी गिवन। एट दिस मोमेंट द सैम्पलिंग विल बी गिवन। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम से देख सकते हैं, जब हम ट्रिगर पल्स अप्लाई करेंगे, दिस पॉइंट ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड, एट दिस पॉइंट रैम्प विल बी स्टार्ट टू जनरेट। यहाँ पे रैम्प जनरेट होना शुरू हो गया है। दिस इज द रैम्प सिग्नल, दिस इज द रैम्प वोल्टेज एंड दिस इज द स्टेयरकेस वेव फॉर्म जो कि हमें स्टेयरकेस जनरेटर से मिल रही है। सो दिस इज द स्टेयरकेस जनरेटर वोल्टेज। एट द पॉइंट, इस पॉइंट पे आकर, एट दिस पॉइंट द रैम्प वोल्टेज एंड द स्टेयरकेस वोल्टेज बोथ आर इक्वल। एट दिस टाइम द सैम्पलिंग पल्स विल बी अप्लाइड टू द सैम्पलिंग गेट। इस मोमेंट पर हम सैम्पलिंग पल्स अप्लाई करेंगे और इस मोमेंट पे हम यहाँ पे सैम्पल्स लेंगे। दिस इज द सैम्पल्स टेकन एट दिस मोमेंट। सो वेन एवर this ramp voltage and this staircase voltage is equal at this moment, जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पर इस पॉइंट पर हो रहा है, at this moment the two voltages are equal, ramp voltage and the generator voltage. At this moment sampling pulse will be applied to the sampling gate. तो जब भी यहाँ पर पूरे वेव फॉर्म में जहाँ जहाँ पर भी दोनों वोल्टेज सेम होंगे, at this point sampling will be taken. So these are the samples that are taken at different time.
जब हम ट्रिगर पल्स देंगे तब रैम्प जनरेट होगा। उस रैम्प वोल्टेज को हम स्टेयरकेस जनरेटर वोल्टेज से कंपेयर करेंगे और जब दोनों वोल्टेज इक्वल होंगे तो उस केस में वहाँ पर सैम्पलिंग पल्स जनरेट होगी। और ये सैम्पलिंग पल्स क्या करेगी? दिस विल ओपन द सैम्पलिंग गेट एंड इट विल स्टार्ट द सैम्पलिंग ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सैम्पल्स कहाँ ले रहे हैं हम? एट दिस पर्टिकुलर टाइम। सो द सैम्पल्स आर टेकिंग at a regular interval, that is fixed intervals. So it is the concept of sampling oscilloscope. अभी जो सैम्पल्स हम ले चुके हैं, हर सैम्पल के लिए वहाँ पर हमें एक स्पॉट मिलेगा ऑन द स्क्रीन एंड आफ्टर द फाइनल waveform will be the compilation or the combination of all the samples. So sampling oscilloscope will give a continuous waveform by using sampling techniques. इससे हम हायर फ्रिक्वेंसी के सैम्पल्स को ईजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग ऑसिलोस्कोप. The advantages of the sampling oscilloscope is that it can measure the very high speed event with the help of the instrument having lower bandwidth. यानी कि अगर हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी यहाँ पे हमें डिटेक्ट करना है, मेजर करना है, तो भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, भले ही हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इट इज़ हैविंग लोअर बैंडविड्थ. सो बाय यूजिंग लोअर बैंडविड्थ इंस्ट्रूमेंट वी कैन मेजर द हाई फ्रीक्वेंसी signals. The disadvantage of the oscilloscope is that it can only measure the repetitive और continuous signal. इसकी ये डिसएडवांटेज कह सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं दैट इट कैन मेजर द रिपीटेटिव सिग्नल और द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल. एंड द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ऑसिलोस्कोप डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन. जो हम यहाँ पर जिस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं वो किसको डिपेंड करेगी? दिस विल डिपेंड्स अपॉन द डिज़ाइन. So it is the advantage and disadvantage of the sampling oscilloscope. Next is the storage oscilloscope. जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का यूज़ कहाँ पर करेंगे हम? टू स्टोर द इमेज और द वेव फॉर्म. सो द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑसिलोस्कोप इज टू फ्रीज इमेज और स्टोर देम फॉर लेटर एनालिसिस. These type of oscilloscope are useful for single shot events such as transients, glitches, etc. जैसे कि जिसमें कि टाइम पीरियड बहुत कम है, जैसे कि ट्रांजिएंट पल्स जो रहती है उसके लिए हम स्टोरेज ऑसिलोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम उसको ज़्यादा देर के लिए स्टोर करके रख सकें. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. वन इज़ एनालॉग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप एंड द अदर इज़ डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. The conventional CRT has the persistence of the phosphor ranging from a few milliseconds to several seconds. But sometimes it is necessary to retain the image for much longer periods, up to several hours. So it requires storing of a waveform for a certain duration that is independent of phosphor persistent. Such a retention property helps to display the waveforms of very low frequency. So storage oscilloscope is used to display the waveform for a longer time. Analog storage oscilloscope. Analog storage oscilloscope are used to store waveform for the later visualization. This analog storage oscilloscope provided the capability for display that would normally persist for a fraction of a second and it can be stored for possibly several minutes. यानी कि ऐसे डिस्प्ले जिसको हम केवल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए देख सकते हैं दैट कैन बी स्टोर फॉर अ सेवरल मिनट्स. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज टेक्निक्स दैट इज़ यूज्ड इन एनालॉग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. फर्स्ट इज वेरिएबल persistent storage and the second is bistable storage oscilloscope. The principle of secondary emission storage is applicable to both variable persistence and bistable storage oscilloscope. Variable persistence storage का ही दूसरा नाम है mesh storage and the bistable storage is also called as phosphor storage. So starting with the variable persistent storage oscilloscope. The variable persistent storage oscilloscope consists of a dielectric material deposit
deposited on a storage mesh. This is called as storage target or the storage mesh. It is placed between the deflecting plates and the phosphor screen. The writing beam is normally focused electron beam charges the dielectric material of the storage target positively where hit. The writing gun or the writing beam is at high negative voltage potential, flood gun at a few volts negative voltage, collector mesh is at about 100 volt positive voltage, and the storage mesh is at the ground potential or the negative volts. Here the low velocity electrons are bombarded on storage target from the flood gun. The positively charged storage target or the storage mesh allows these electrons to pass through to the phosphor screen. Thus, the image stored with the help of the storage mesh gets reproduced on the screen. Thus, the storage technique has both storage target and a phosphor display target used for storing and displaying the image. यहाँ पर दो स्क्रीन यूज़ की जाती हैं. फर्स्ट इज़ द storage mesh and the second is the phosphor screen. So, this is the construction of the variable persistent storage oscilloscope. This technique is also known as the mesh storage technique. It consists of two screen storage mesh and a phosphor screen. Application of variable persistent storage oscilloscope. This is used for storage of an entire waveform of a slow moving signal, which then fades before the next trace is written. It can also be used to store several traces before the first one fades so as to see how the signal changes with time. So it is the application of variable persistent storage oscilloscope or the storage mesh technique. Next is bistable storage oscilloscope. In this technique of storage, the tube used is a bistable storage tube. The same material is used for both the storage target and the display phosphor. So the name is bistable tube. Here, a thin phosphor layer acts as storage target as well as the display target. The material used for both storage and display target is P1 phosphor to achieve good secondary emission characteristic. The bistable nature of the tube means that the trace is either stored or it is not. It means the brightness is thus on or off. For this purpose, the split screen version can be used. Here, the float gun are switched on to provide a stream of low energy electron toward the screen. These electrons have low energy and they cannot penetrate phosphor and are gathered due to collimator. The screen becomes negatively charged until it reaches a potential where it repels all further float gun electrons. When writing gun is switched on, its electrons have very high energy required to cause the secondary emission from the areas traced on the screen. The trace is therefore at high positive potential. This is stored due to low leakage of the phosphor. The low energy electron beam from the float gun are now attracted to the positive areas of the screen and pass through the phosphor to reach the metal film at the back. While passing through the phosphor, they cause it to glow, displaying the area traced out by the writing gun electron beam or the stored image. The erasing of a stored waveform is possible by applying a negative voltage to the metal film, due to which the electrons are repelled back. So it is the concept of
phosphor storage or the bistable storage oscilloscope. It is also shown here in the slide. The bistable storage tube is slower than a variable persistence tube. It is capable of much longer storage time, measured in hours rather than in minutes as for variable persistence. It is also capable of operating in split screen mode, where half of the screen has storage capability and other half is a conventional phosphor screen. Here, the same phosphor screen is used for both storage and display. This is the main differentiation between the variable persistence and bistable storage oscilloscope. वेरिएबल वाले इसमें हम दो स्क्रीन यूज़ करते हैं, एक स्टोरेज मेश और एक फॉस्फर, और बायस्टेबल स्टोरेज में हम सेम स्क्रीन को ही दोनों के लिए यूज़ करते हैं, स्टोरेज के लिए भी और डिस्प्ले के लिए भी. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज बायस्टेबल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. The phosphor layer consists of a thin coating of scattered particles to give a discontinuous surface. It stops the boundary migration of stored charge. The thin phosphor coating also has a short life since it suffers from light output reduction with time. The conductive film is held at a low positive potential so as to attract a cloud of low energy to penetrate the phosphor and are gathered by collimator. There are some disadvantages of analog storage oscilloscope. So mostly digital storage oscilloscope is used in nowadays. The problem with the analog storage oscilloscope is that the waveform can be preserved for finite amount of time only and eventually the waveform will be lost. यानी कि हम एनालॉग स्टोरेज में हम केवल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको स्टोर करके रख सकते हैं और टाइम के साथ वो ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो जाएगा. As long as the image is required to be stored, the power must be supplied to the tube. जब तक हमें इमेज को स्टोर करना है तब तक हमें पावर वहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई देना पड़ेगी. The trace obtained from the storage tube is not fine as compared to the conventional oscilloscope tube. So, due to these disadvantages, analog storage oscilloscope को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता. We are using digital storage oscilloscope in our practical labs. A digital storage oscilloscope is an oscilloscope which stores and analyzes the signal digitally rather than using analog techniques. It is the most common type of oscilloscope in nowadays because of its advanced trigger, storage, display, and measurement feature that it provides. This is the block diagram of digital storage oscilloscope. जैसा कि हम देख सकते हैं इस डायग्राम में बाकी पूरा कंप्लीट वही है जो कि हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं. देयर इज़ एन वर्टिकल एम्पलीफायर, दिस हैव वी ऑलरेडी डिस्कस. दिस इज़ द CRT, this is the horizontal diffraction amplifier, this is the vertical diffraction amplifier. So these are the same. The only difference is that we are using here some circuitry like control logic, sample and hold, analog to digital converter, memory, like this. It is used to store the data digitally in the oscilloscope. As you discussed that digital storage oscilloscope eliminate the disadvantages of analog storage oscilloscope. So we are discussing now the block diagram of digital storage oscilloscope. In this oscilloscope, the waveform to be stored is digitized and then stored in a digital memory. The power to be applied to memory is very small and can be supplied by a small battery. Due to this, the stored image can be displayed indefinitely as long as power is supplied to the memory. Once the waveform is digitized, then it can be further loaded into the computer and can be analyzed in detail. As we can see from the block diagram, the input signal is applied to the amplifier and attenuator section. The oscilloscope use same type of amplifier and attenuator that we use in the conventional oscilloscope. The attenuator signal is then applied to the vertical amplifier. The vertical input after passing through the vertical amplifier is digitized by an analog to digital converter. जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे जो आउटपुट
एम्पलीफायर, यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो कहाँ जा रहा है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट में। सैंपल एंड होल्ड सर्किट का क्या काम रहेगा, सैम्पलिंग करना और उस सैंपल वैल्यू को होल्ड करके रखना जब तक कि वो उसको हम डिजिटाइज नहीं कर लेते हैं। सो द आउटपुट ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर गोज टू द सैंपल एंड होल्ड सर्किट and then it goes to the analog to digital converter. To digitize the analog signal, analog to digital converter is used. It is used to create a data set that is stored in the memory. The data set is processed by the microprocessor and then it is sent to the display. इसको जो भी यहाँ पे कन्वर्जन होगा वो कहाँ स्टोर रहेगा, मेमोरी में, और इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इट इज़ टू डिजिटाइज एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे हमने एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर यूज़ किया, अब उसके बाद हमें इसको फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, D2A कन्वर्टर. So it converted into analog form and then it goes to the vertical deflection amplifier and then to the vertical deflection plates. The output of the vertical amplifier is applied to the A to D converter section. इस पूरे सेक्शन को हम क्या बोलेंगे, A to D conversion. The main requirement of the A to D converter in the digital storage oscilloscope is its speed. The digitized output need only in the binary form or not in the BCD or the binary coded decimal. The successive approximation type of A to D converter is mostly used in the digital storage oscilloscope. We are using successive approximation type A to D converter. Then digitizing the analog input signal means taking samples at periodic intervals of the input signal. The rate of the sampling should be at least twice as fast as the highest frequency present in the input signal, according to the sampling theorem. This ensures no loss of the information. The sampling rate and memory size are selected depending upon the duration and the waveform to be recorded. Once the input signal is sampled, the A to D converter digitizes it. The signal is then captured in the memory. Once it is stored in the memory, many manipulations are possible as memory can be read out without being erased. So it is the principle of digital storage oscilloscope where we use A to D converter to store the data digitally in the memory and we can use data later on. This is the theory of this DSO. The input signal is applied to the amplifier and attenuator. The attenuator signal is then applied to the vertical amplifier. To digitize the analog signal, A to D converter is used. The output of the vertical amplifier is applied to the A to D converter section. We are using successive approximation type converter. Sampling rate and memory size are selected depending upon the duration and waveform. The signal is then captured in the memory and once it is stored in the memory, many manipulations are possible. So this we have discussed already. It is the theory of digital storage oscilloscope. Next is the advantages. The advantages of digital storage oscilloscope are, first is it is easier to operate and has more capability. The storage time is infinite. The display flexibility is available. The number of traces that can be stored and recalled depends upon the size of the memory. The characters can be displayed on a screen along with the waveform, which can indicate waveform information such as minimum, maximum value of the frequency, amplitude, etc. Keeping the records is possible by transmitting the data to the computer system where the further processing is possible. Signal processing is also possible, which includes translating the raw data into finished information. It means computing parameters of a captured signal like RMS value, energy value, etc. So this is the theory of digital storage oscilloscope. In this lecture, we have discussed the sampling oscilloscope and the storage oscilloscope. Thank you.